Good morning, dear student. Today I will tell you some important topics related with your board exam. Sometimes it comes in one number and sometimes it comes in three number also. It is given in NCERT. That is Rio de Janeiro Earth Summit 1992. 1992 में रियो डी जेनरियो एक जगह है, वहाँ पर एक अर्थ समिट हुआ था. इन जून 1992 more than 100 heads of the state meet in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problem of environment protection and socio-economic development at the global level. बस इतना ही आपके बुक में भी दिया है, इतना आपसे कंसर्न है. ये कभी कभी एक नंबर में आ जाता है या दो नंबर में आ जाता है, तो इतना लिखना पड़ता है. वो कभी कभी पूछ लेता है वेयर रियो डी जेनरियो और समिट हैपेंस टुक प्लेस. कभी पूछ लेता है व्हेन रियो डी जेनरियो और समिट हैपेंस, दैट इज 1992. समटाइम इट इज आस्क्ड हाउ मेनी heads of the state have participated. The answer is 100 heads of the state have participated. Now sometime question comes, what it is Agenda 21? It is a declaration signed by world leaders in 1992 at the UN Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. एक एजेंडा था जिस पर 100 से ज़्यादा देशों के लीडर्स ने तय किया था हम सब मिलकर के काम करेंगे पृथ्वी की भलाई के लिए. तो ये एक नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी तीन नंबर में मिला के पूछ लेता है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाता है. तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि अक्सर ये पूछा जाता है. ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है. थैंक यू. नाउ डियर स्टूडेंट, इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट द लैंड रिसोर्स. Land resource. Land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. India's land under a variety of relief features, namely mountain, plateau, plains and island as shown as below. Out of the total land available to India, 43% area comes under plain, 27% area comes under plateau, and 30% area comes under the mountain area. Land under important relief features. This figure is very much important for you. Sometime 1 marks question or 3 marks question come from this figure and ask them to explain it. Sometimes they ask give a figure showing the relief features of India according to their percentage. So this figure is very much important. You must take very utmost care of this figure. Now we will talk about the land utilization. Sometimes one number question comes, major portion of area are under what? Plain, plateau or mountain? The correct answer is plain. Maximum area of India is plain. Now we will talk about the land utilization. Land resources are used for following purpose. Number 1, forest. I will give you figure in next slide. Number 2, land not available for cultivation, that is barren land or wasteland. Next is land put to non-agriculture uses. Now the slide is over. Thank you. In next slide I will tell you more about it. बच्चों, पिछली स्लाइड में आपने देखा कि लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है. पहला तो एक बहुत बड़ा एरिया है दैट इज़ अंडर फॉरेस्ट. दूसरा आपने देखा वेस्टलैंड. वेस्टलैंड, व्हाट इज़ वेस्टलैंड? आई हैव टोल्ड यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. मैंने आपको बता दिया. वेस्टलैंड वो लैंड है जिसको ह्यूमन काफ़ी समय से यूज़ करता आ रहा है, जैसे रेलवेज है, बिल्डिंग्स है, जिनकी रख रखाव नहीं की गई है, धीरे धीरे वो ख़राब होता चला गया. अब उसके अलावा देखते हैं और किस तरह से यूज़ होता है लैंड इंडिया में. नेक्स्ट इज़ फेलो. ये गलती से 4 लिखा गया, 3rd है फेलो लैंड. फेलो लैंड इज़ द लैंड विच वी कीप फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. खाली छोड़ देते हैं. एक बार खेती किया, कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं, चलो उसकी मैन्योर फर्टिलाइजेशन नहीं डालेंगे, धीरे धीरे उसकी उर्वरता फिर से वापस लौट आएगी, तो खाली छोड़ दिया जाता है कुछ ज़मीनों को. दैट इज़ फेलो लैंड. Next is other uncultivated land excluding fallow land.
उसके अलावा बहुत से ऐसे लैंड है जिन पर हम खेती नहीं करते हैं, अनकल्टिवेबल लैंड है, जैसे हमारी बिल्डिंग हो गई, स्कूल बिल्डिंग हो गई, ये सब एरिया, बहुत सी बिल्डिंग हैं, बहुत से एरिया हैं जहाँ पर अदर देन फेलो लैंड उस पर हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं. एंड नेक्स्ट इज नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया मीन्स वो एरिया पूरे लैंड का जिस पर खेती होती है. तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया है, और यही 5 तरीके हैं लैंड यूटिलाइजेशन के हमारे इंडिया में जो कि पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. अभी आपने यूटिलाइजेशन पढ़ा था, अब आप पैटर्न पढ़ गया. इन योर एनसीईआरटी बुक फिगर इज गिवन which tells about the difference between land use pattern of India in 1960 and after nearly about 55 years, 2015. The data is a comparative study of the land use pattern of India within gap of 55 years. So in this we will see again in next slide. Dear student, in this slide we will see the figure given in your textbook. We will study it. Land use pattern in India. Generally, physical factors such as topography, climate, soil types. Second is human factors such as population density, technological capability, and cultural tradition, etc. These are the things, physical and human factors, which determine the land use pattern. Now we will see the figure which is given below. We will study the 1960-61. You can see 18.11% area was under forest, 18.11 area was under barren and uncultivable land. What is barren land? I have already told you. 4.95% area was under non-agriculture uses, maybe any other uses. Then we comes over the 4.7% permanent pasture grazing land. What is permanent pasture grazing land? ये चारागाह बोलते हैं. दिस एरिया आर यूज फॉर फीडिंग द एनिमल्स एंड कैटल्स इन आवर कंट्री. ऑलवेज दिस आर रिमेन लाइक अ फेलो लैंड. इसको हमेशा खाली छोड़ दिया जाता है. यहाँ जो भी घास होती है चारागाह की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जानवर उस पर अपना चारा की तरह इस्तेमाल करें और अपना जीवन यापन करें. कैटल्स के लिए होता है. इस एरिया का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं एग्रीकल्चर के लिए. आफ्टर दैट area under miscellaneous tree crops and groups, that is 1.50%. 46.26% area was area under net zone area. कितना था? Now we'll come over the 2014-15 data. Cultivable wasteland was 4%, fallow land 23.3%. Current fallow land 4.9%, and net zone area you can see 45.5%. You can see in 2014-15 the forest area has been increased from 18% to 23.3%. Means after 55% our forest covered area was increased by nearly about 5%. And net zone area, which was 46.26%, it became 45.5%. So this was the comparative study of the land utilization pattern in India. Thank you.